Good morning student, welcome back here. I hope all are well, and now let's start for chapter number 4 and climate, class 9th geography, and this part 1. Now let's start. Now student, weather and climate. Weather means condition of the atmosphere over a very short period of time, just changes the frequently, okay? But climate, average weather condition of a place for a longer period of time and does not changes as the average is taken for over a 30 to 40 years. Okay, now let's see. In weather is something that fiddles with the control knobs, and it means ki weather in this hour to hour and day to day condition of the atmosphere. See in this picture, okay? First, second, third. This is the picture is show is the condition of the atmosphere hour to hour, yet day to day is condition or changes. Just example, a hot or humid weather may make one irritable, but a pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Okay, so weather can change dramatically, student, from day to day. Okay, day to day. Now let's start next topic, climate. Student, weather. The weather of a place can change rapidly. I'm already discussed, but see, just morning time, clear sky in the morning, and just evening time is the cloudy in the evening. Just imagine कि weather is then in this hour to hour and day to day condition of the atmosphere. Okay, now next. Of a particular place depend on. It is the main elements of weather and climate. See, firstly, the temperature. The temperature means ki the degree of hotness and coldness of the air, and temperature is differ during the day and night. हमेशा आपने देखा होगा डे और नाइट का जो टेम्परेचर है वो डिफर करता है, फ्रॉम सीजन टू सीजन डिफर होता है. द हीट इज ड्राइव फ्रॉम द इनकमिंग जो सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ. और इस तरीके से जो टेम्परेचर आर हाइयर इन द सिटीज ड्यू टू द मेल्टेड रोड्स एंड जो सीमेंटेड ऑफ हाई राइज ऑफ बिल्डिंग देन इन विलेजेस और ओपन एरियाज. प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. प्रेशर जब फॉल होने लगता है विद द इंक्रीज इन हाइट. ओके, जब प्रेशर फॉल होता है तो हाई वो ऊपर की ओर, मतलब लो प्रेशर एरियाज मीन्स इन द हॉट राइजेस. जब गर्म जब वो होती है तो वो उसकी जो वेट होता है वो बहुत लाइटली होने लगता है. तो लो प्रेशर एरियाज हैव द क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर, और फिर ऊपर की ओर जाने लगती है हवा. एंड हाइयर जो प्रेशर एरियाज होती है जहाँ पे हैव कोल्ड एंड हैवी एयर होने लगता है तो वो नीचे की ओर आने लगती है. और हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई. तो एयर हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, यू अंडरस्टूड कि प्रेशर का जो वो है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर. हाई से हमेशा लो प्रेशर की ओर, लो से हाई. ये हमेशा जो गैप्स हों उनके बीच में आते हैं वो इसमें कंप्लीट करते रहते हैं आपस में. जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूशन में बना रहता है. और विंड्स क्या करती हैं उस टाइम पे? जो विंड्स होती हैं, जो मूवमेंट हॉरिजेंटली वे में होता है स्टूडेंट, मूवमेंट्स ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड द विंड. ये हमेशा याद रखिए कि दिस इज द विंड्स मीन्स की द हॉरिजेंटली मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड द विंड. और जो स्पीड होती है, जो डायरेक्शन होता है ऑफ द विंड वेरीज करती है हमें. और विंड्स जस्ट फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. फर्स्टली परमानेंट विंड ट्रेडर्स, एंड सेकेंड सीजनल मानसून आपने नोटिस किया होगा, और जस्ट लोकल विंड्स जस्ट लाइक लैंड, सी ब्रीज एंड लू एटसेट्रा. बट जो एयर और विंड मैंने डिस्कस किया, प्रेशर, बट मॉइस्चर इन द एयर क्या है, उसका क्या वर्क? जस्ट ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल कैसे होता है? तो स्टूडेंट, ह्यूमिडिटी इन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट करता है बहुत ज्यादा और इन द एयर. तो व्हेन वाटर वेपर राइजेस होने लगता है देन द एयर एंड कूल्स. ओके,
और condenses clouds are formed and then rainfall. फिर क्या होता है, rainfall हो जाता है. तो there are 3 types of rain. Firstly आपका हो गया cyclonic rainfall and relief rainfall and convectional rainfall. तो rain is important for plants also, animals, for man. तो आपने देखा कितनी importance है हमारे इन elements weather and climate, just temperature, pressure and wind and humidity and rainfall. Okay, now next. Now students, see the picture, temperature, the amount of moisture in the air rises. I am already discussed, but see the picture. In the air rises, and when the sun heat converts water from the oceans, seas and rivers, lake, convert into the water vapor. Okay, and what जब ये सारी चीजें convert होती है, it is the जो form क्या होता है, then the rainfall. Now next. The coastal areas get more rainfall than places away from the coast. See the map. This is the coast area. Okay. This place, this is the coast area, west and east. They are both part for coast area, and there are the rainfall. Now next. Now students, see the temperature. See the picture. Low pressure is the heated air rises up. Okay. And high pressure cool air moves in the replace the rising air. वो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है कि वो अभी मैंने बताया कि बल्कि होने लगता है. तो वो जो हाई प्रेशर एरियाज होती हैं, they have cold and heavy air. तो high pressure is associated with the clear and sunny skies. And the movement of air from high pressure areas to low pressure areas causes the wind. See the picture, student. This is the pressure for the low pressure and high pressure. तो ये जो gap, इसमें जो differences gap है, तो air always moves from the high pressure areas to low pressure areas. Now next. The climate is the weather condition of an area over a long period of time. It means कि does not changes as the average is taken for over a 30 to 40 years is what changes climate. See in this picture, student. Now next. Now student, just climate of a place depend on average monthly or yearly temperature. मतलब just climate of a place, now you understood कि climates is the average weather condition of a place for a long period of time. Climate is the sum total of the weather condition including the variation over a large area for a long period of time and more than 30 to 40 years. But I am already discussed the weather. Weather just refer to the state of the atmosphere over an area at any point of time, and based on the generalized monthly and atmospheric condition, the year is divided into a season such as just winter, summer and rainy season. And just climate is the very long period of changes. Okay, see the in this picture average monthly or yearly temperature. Now next. The climate of a place depend on rainfall also, snow, but just average amount of rainfall or snow. This is the climate changes. Okay, this is the main depend of place. Now next. Student, see the in this picture rice and wheat. This type of food people grow and eat also influence of climate also. Okay, food and जो भी खाने का तरीका या ग्रोइंग जो होती है वो सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट पे. नाउ नेक्स्ट. ऑफ क्लॉथ्स एंड दे वेयर आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट आल्सो. सी इन दिस पिक्चर आपने देखा, नोटिस किया होगा क्लॉथ्स का जो पहनने का तरीका, वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट पे. नाउ नेक्स्ट. Now student, climate and weather. Climate refer to the sum total of weather condition and varies over a large area for a long period of time more than 30 years. Weather refer to the state of the atmosphere over an area and at any point of time. Okay. It means कि weather is the condition of the atmosphere over a short period of time and changes the frequently. But climate does not changes as the average is taking for over a 30 to 40 years changes. Okay. Now next. See the student elements of weather and climate. Firstly, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. Now next. Climatic control. There are 6 major control of the climate of any place. They are first latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean current and relief features. Now student, latitude.
Latitude, the angular distance of a location from the equator in north-south direction is called a latitude. जो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड. एंड ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी एंड रिसीव वेरीज फ्रॉम द लैटिट्यूड. एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जब डिक्रीज करता है फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पोल्स की ओर. एंड जो एल्टीट्यूड है जस्ट लाइक डिफर बिकॉज इट रिफर टू द हाइट अबव मीन सी लेवल एंड विथ इंक्रीज ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर डिक्रीज एंड एयर बिकम लेस डेंसेस. And therefore highly jo regions are just cooler in summer. But pressure and wind system, this is the different because pressure is the weight of air on the earth's surface and pressure fall with the increase in height. And low pressure areas means the hot end rises, and low pressure areas have cloudy skies and wet weather, and high pressure areas have cold and heavy air. High pressure is associated with clear and sunny skies and air always moves from high pressure areas to low pressure. आपने नोटिस किया होगा एयर जो प्रेशर है वो हमेशा मूव करते रहते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इट इज द इन्फ्लुएंस फॉर प्रेशर. एंड जो विंड सिस्टम है हॉरिजेंटली है, दिस मूवमेंट ऑफ एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड अ विंड. तो इट इन्फ्लुएंस टू द टेम्परेचर ऑल्सो एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ द एरिया. और ये दोनों जो इन्फ्लुएंस है वो क्लाइमेट इफेक्ट्स है, प्लस आपने नोटिस किया होगा कि टेम्परेचर और रेनफॉल का जो पैटर्न भी है वो इस पे डिपेंड करता है प्रेशर और विंड सिस्टम पे. नाउ नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. एंड द सी इज एग्जिस्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट. एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस तो द वेदर कंडीशन बिकम मोर एक्सट्रीम एंड दिस कंडीशन नोन एज द distance from the sea. So high temperature and rainfall variation between the season. Okay, and ocean current along with the onshore winds, the ocean currents warm or cold affect the climate of coastal areas. Just example, just cold onshore currents bring the coolness and coastal areas, and relief features high mountains stop cold or hot winds from reaching a location. It can also cause rain or snow if the place is on the windward side, windward side of the mountain and the leeward side of the mountain, relatively dry places. Now next.